Biotechnology principles and processes. See, first very important thing is biotechnology is useful for human being in variety of ways. There are different eras, there are different periods in which we use biotechnology, and now we are using a modified version which is going to molecular level. If we talk about ancient old biotechnology, it starts with simply making curd, beer, whiskey, rum, brandy, right? Alcoholic beverages. It may be initially on small scale, then on large scale. When we were processing variety of raw materials by using these microbes, these biological agents or their enzymes, this process is biotechnology. सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो कौन से भी मीडिया को प्रोसेस करने के लिए, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए अगर हम लिविंग एजेंट या उनके एंजाइम्स को डायरेक्टली यूज करते हैं, प्रोसेसिंग करके वैरायटी ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं, तो उसको हम बायोटेक्नोलॉजी बोलेंगे. ओल्ड बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड्स में कर्डलिंग, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस, then processing of cheese on large scale, these areas were covered. That time we were not talking about DNA recombinant technology. Whatever microbe has its own genetic material, it was used for processing of material so as to obtain variety of end products as well as so as to obtain variety of services for Homo sapiens. So biotechnology is applied branch of biology in which human beings are always benefited in this way, that way. But now, when we are focusing on advancement of biology, microbiology, genetics, then molecular level, then we develop engineering techniques. When we integrate all that information together and work at micro level, then now biotechnology is having a modified term, that is DNA recombinant technology, that is genetic engineering. Broadly बोला जाए तो बायोटेक्नोलॉजी के सब ब्रांचेस, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, जीन मैनिपुलेशन, राइट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ये है जिसमें हम मेनली डीएनए को मॉडिफाई करने के बारे में सोचते हैं. सो वॉट एवर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वी आर यूजिंग फॉर प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, वी आर altering them genetically, growing them in laboratory with the help of tissue culture, and such genetically modified microorganisms are used for the processing of raw material so as to obtain goods and services. In other way, even production of test tube babies, if there is some problem related to fertility, then fertilization can be done in vitro in laboratory in glass vessels. Once the embryo are growing, they are implanted in uterus of surrogate mother and there they grow. So this is also one part of biotechnology. So if we consider old methods as well as new methods, biotechnology include all these processes. Okay, let us read the things. See, these are the different applications of biotechnology. Production of new and improved crops as well as food. So DNA recombinant technology से हम genetically improved crop बनाएंगे, food products बनाएंगे, right? So that is first very important thing. Then production of industrial chemicals, it may be enzyme, plant growth hormone, animal hormone, different vitamins which can be used, which can be processed by microorganism and they are obtained. जैसे हमने vitamin A, vitamin B, vitamin C, D, then penicillin like antibiotic we discussed. These are all even included in pharmaceuticals. अगर modified biotechnology की बात करें तो pharmaceuticals में monoclonal antibiotic भी आएंगे which are very specific to one particular disease, and it may be even important for maintaining livestock. Means whatever said food, recombinant DNA, recombinant cells we have prepared can be stored in gene bank, can be stored in gene pool. Second important feature is diagnostic for detecting genetic diseases. जैसे DNA fingerprinting है,
अलग अलग बाकी के मेथड है, पेडिग्री एनालिसिस है, उनको मॉडिफाई करके प्रॉब्लमेटिक जीन को लोकेट करके उसका ट्रांसफर देखना, ओके, और एक पर्टिकुलर डिजीज को डायग्नोज करना. इट कैन बी इवन included in biotechnology because it needs help of genetics as well as its transmission to next generation and gene interaction. जीन इंटरैक्शन की पढ़ाई भी बायोटेक्नोलॉजी के पढ़ाई के लिए जरूरी है. जीन थेरेपी, जीन थेरेपी मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर को रेगुलेट करने के लिए हम अलग अलग मेथड यूज करेंगे, जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, प्रॉब्लमेटिक जीन निकाल के हेल्दी जीन डालने की प्रोसेस है. So these are all included in gene therapy. Next one is vaccine development, recombinant vaccine. पोलियो का वैक्सीन अगर हम लेते हैं, it is a hit-killed or weakened pathogen which induces, stimulates our immune system to develop resistance for the pathogenic virus of polio. So हम अलग अलग प्रकार के वैक्सीन जो डिजीज के लिए प्रिवेंटिव मेजर देने के लिए बहुत जरूरी है, और वायरस के लिए वैक्सीन बना के इम्यूनिटी डेवलप करना इज द ओनली सोल्यूशन वी हैव व्हिच कैन बी वर्कड आउट विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. प्रोटेक्शन ऑफ endangered species. If the species is incapable to grow in particular area, it is becoming infertile, it is having some demerits of continuous selfing. वो कंडीशन में डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी करके उनके डीएनए को मॉडिफाई करके उनको रेजिस्टेंट फिट वैरायटी बना के क्लोनिंग करके टिश्यू कल्चर करके माइक्रो प्रोपोगेशन करके वो स्पीसीज का हम परपेचुएशन प्रमोट कर सकते हैं. कंजर्वेशन बायोलॉजी, तो environmental conservation, resources conservation can be done even with the help of biotechnology. Bioremediation, okay, it is like curative methods, disease वगैरह क्योर करने के लिए ये काम करेगी. Forensic application, forensic application is crime stories में, यहाँ पे अगर हमको कोई क्रिमिनल ढूंढना है, उसके लिए हमको एडवांस मॉडिफाइड बायोलॉजिकल प्रूफ चाहिए, तो वहां पे भी बायोटेक्नोलॉजी हमको हेल्प करती है. प्रोडक्शन ऑफ फूड इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो पहले पॉइंट में भी इंक्लूडेड है, लेकिन पहले हमने क्रॉप और अदर फूड के बारे में बोला था. फूड प्रोसेसिंग में यहाँ पे हम चीज, देन बियर, देन इट मे बी फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स लाइक इडली, डोसा, ढोकला, इट मे बी डोमेस्टिक यूज, bakery products, your cakes, then pastries, all are fermented products, and that is again use of biotechnology in day-to-day life. So this is how biotechnology was useful in old days, and it is very much useful in our recent lifestyle because it is giving us a very helping hand, it is providing us a great helping hand in medicine, development of vaccines, antibiotics, etc. So these are different biotechnological applications at different levels. It is mainly involving large scale production of the product, hence it requires help of engineering principles. Now there are different definitions of biotechnology. NCERT में एक ही दी है, स्टेट बोर्ड में 2 definitions दिए हैं, and you know it is important lesson for 12th board. Remember, this part is difficult to remember, so MCQ सॉल्व करने में तो आपको दिक्कत जाएगी, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी पे थ्योरी क्वेश्चन जो आपने लिखने हैं उसके लिए भी आपको थोड़ा रट्टा एज वेल एज प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन स्किल के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड के मार्क आपको थोड़े तो अच्छे लाना, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जरूरी है. सो वॉट एवर डिफरेंट डेफिनेशंस आर गिवन इन स्टेट बोर्ड, यू हैव टू रट्टा देम. सो दिस इज वन ऑफ द डेफिनेशन. Right, and one more definition is given in state board. Let us go through it. The art of utilizing living organisms and their products for the production of food, drink, medicine, or for other benefits of human race or other animal species. This is a simple definition for your understanding. It can be briefed like that. तो ये पॉइंट आपके स्टेट बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है. प्लीज कॉपी इट डाउन. इट इज द आर्ट ऑफ यूटिलाइजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स and their products
for the production of food, drink, medicine, or for other benefits of human race or other animal species. Because being wise human, we are not only interested in Homo sapiens development, but we always try to maintain this ecosystem balanced. So for that we need to grow, nurture other animal species, even rare species. We can protect them from extinction, and this all can be done by promoting their growth artificially, maybe by DNA recombinant technology, maybe by surrogacy, maybe by test tube baby formation, etc. etc. So it is a simple point useful in state board exam. This is the definition, very important. And one more very important point regarding the long form is EFB. It can be asked. So it is European Federation of Biotechnology. According to this organization, biotechnology can be defined like this: the integration of natural science and organisms, cells, parts thereof, and molecular analogues for production, for products and services. Means simply for production of different products, providing services to human beings, we are using microorganisms. Okay, this can be organism, this can be cells, this can be part of some organism or their molecular analog, matlab enzymes extracted from such cell can also be used for the processing of material. And obviously when we are using all this, we need help of natural science, we need help of engineering principles, and we need processing of material so as to obtain variety of end products. तो यहाँ पे दो बातें, एक तो सबसे पहले डेफिनेशन रखनी है और दूसरा EFB का लॉन्ग फॉर्म. One more definition is given in state board. It is science. Biotechnology is a branch of biology, applied branch of biology, dealing with scientific and engineering principles for the processing of material by biological agents so as to obtain goods and services. I repeat, biotechnology is a applied branch of biology dealing with scientific and engineering principles for the processing of materials by biological agents so as to obtain goods and services. अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग सर्विसेज ऑब्टेन करने के लिए, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करेंगे या उनके प्रोडक्ट यूज करेंगे, और उसके लिए एडवांस इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग की हमको जेनेटिक्स की जरूरत पड़ेगी. So these are the two definitions included in state board as well as NCERT. Now tell me, this definition is given by which organization? Now the main two principles on the basis of which the microbiology developed. So two core techniques that enable birth of modern biotechnology are: first one, genetic engineering. As you know, we discovered restriction endonuclease. We know that genetic code is universal, right? Because of these two main discoveries, we can think of isolating a DNA, cutting a DNA, isolating a DNA, then attaching it to another cell and obtaining its expression in other cells also. So this is total genetic engineering, rDNA technology, recombinant DNA technology, which is called genetic engineering. So it is possible because we have restriction endonuclease. It is possible because we know genetic code is universal triplet and it is non-ambiguous. Okay, सब genetic code के properties आप यहाँ पे recollect कर सकते हो. AUG means methionine means methionine. It is true for eukaryotes as well as prokaryotes, for fungi, plant, animal, etc. That is what is the base on which genetic engineering is relying on. And one more thing is that maintenance of sterile ambience. When we are dealing with all these things, जब हम DNA recombinant technology, gene transfer के बारे में बात करेंगे, तो इसके लिए हमको sterile ambience मतलब contamination free environment रखना बहुत जरूरी है. तो ये सब हमने टिश्यू कल्चर के लिए सीखा था. That will keep the environment sterilized
to avoid unwanted growth, to avoid contamination, and allow the microorganism to grow. So it is possible only when everything is contamination free, and that is sterile ambience. These are the two basic things required for DNA recombinant technology, and these two principles the biotechnology is best. This is a simple flow chart explaining page number 194 of NCERT. It is giving you clear idea that how biotechnology is really imparting, contributing, difference making aspect as far as agriculture is concerned. If we take total review, अगर हम पहले से plant breeding, please relate this total information with enhancement in food production. As we started thinking about green revolution, we used hybrid varieties and agricultural chemicals. So here, the important aspect we deal for success of green revolution is plant breeding. Plant breeding on the basis of use of sexually reproducing plants, and there we use the pure line selection, mass selection, in which desired genes were brought together with the help of crossing, sexual reproduction, and selecting a desired recombinant variety. Okay, मेंडल ने क्या किया? प्लांट ब्रीडिंग किया. टॉल प्लांट क्रॉस विथ टॉल व्हाइट कलर्ड फ्लावर वाला प्लांट क्रॉस किया ड्वार्फ रेड कलर फ्लावर से और परमिटेशन कॉम्बिनेशन ऑब्टेन किए. इसमें से जो भी वैरायटी का कॉम्बिनेशन, जो भी वैरायटीज का कॉम्बिनेशन हमारे लिए डिजायर्ड था, उसको हमने सिलेक्ट किया और क्रॉप को इम्प्रूव किया, प्लांट को इम्प्रूव किया, एनिमल्स को इम्प्रूव किया. So here lies plant breeding as well as animal breeding. But here the important thing is that the breeding which is based on sexual reproduction, it is done within the member of same species. आप wheat का रेजिस्टेंट का जीन, डिजीज रेजिस्टेंट का जीन अगर व्हीट स्पीसीज में है तो वो आप राइस को नहीं दे सकते हो, बराबर. सो दिस इज द लिमिटेशन. अलॉन्ग विद दैट, प्लांट ब्रीडिंग के प्रोग्राम से जो भी वैरायटी आप डेवलप करते हो उसके लिए सालों लगते हैं. सो दिस कॉम्प्लिकेटेड, कॉस्टली, यू गेट अ हेटेरोजाइगस वैरायटी, इट डजंट ब्रीड ट्रू. वो आपको सेम जीन्स नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन नहीं करती. उसकी वजह से एवरी ईयर प्लांट ब्रीडर को पेरेंट को क्रॉस करके हाइब्रिड बनाने हैं और वो कॉस्टली हाइब्रिड फार्मर को खरीदने हैं. ओके, बाय डूइंग ऑल दिस, मतलब इतना सब डिफिकल्ट काम करने के बावजूद इट्स नॉट गिविंग अस अ स्टेबल वैरायटी बिकॉज इट इज undergoing natural process of cross pollination. So when we come across variety of demerits of this plant breeding aspect, we started thinking of developing clone by vegetative reproduction when we don't want any genetic recombination. If a parent or a crop which is there with you is having all the desired characters and you don't want any variation, then go for mitosis only, that is vegetative reproduction, production of clonal propagation. But when you go for vegetative reproduction, you get the vegetative reproduction always leads to development of adventitious roots. So huge tree में, horticulture में, fruit plants में, trees में आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करके एडवांटेशियस रूट को यूज करके ट्री को डेवलप कर ही नहीं सकते हो. तो हमने वहां पे ग्राफ्टिंग का मेथड डेवलप किया. जैसे देखो, एवरी मेथड हैज सम प्रॉब्लम. टिश्यू कल्चर करोगे, डिजीज फ्री प्लांट मिलेगा, बराबर. स्ट्रेस रेजिस्टेंट प्लांट मिलेगा लेकिन एडवांटेशियस रूट मिलेगा. ओके, जेनेटिक मेकअप कॉन्जर्व होगा लेकिन एडवांटेशियस रूट मिलेगा. तो जेनेटिक मेकअप कॉन्जर्व भी करना है और टैपरूट सिस्टम चाहिए, तो हमको करना पड़ेगा ग्राफ्टिंग. आर यू गेटिंग दैट? सो दिस इज हाउ इन एग्रीकल्चर प्लांट ब्रीडिंग एक मेथड है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक मेथड है, ग्राफ्टिंग एक मेथड है. आर यू गेटिंग दैट? ओके, सो अलॉन्ग विद दैट अब बायोटेक्नोलॉजी में जीएमओ बनाना ये एक मेथड है. अल्टीमेटली प्लांट ब्रीडिंग में हमने क्या किया था कि डिजायर्ड जीन्स को इकट्ठा लाने की कोशिश की थी, जो बड़ी दिक्कत वाली बात थी. तो उसके लिए हमने क्या किया, डिजायर्ड जीन को कट किया बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. वी यूज व्हीकल वेक्टर एंड ट्रांसफर टू द क्रॉप प्लांट. So this is how biotechnology is helping us to develop
genetically modified organisms. Right? Next one, it is conservation of tillage. Okay, अब ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस पॉइंट जाएगा, लेकिन ये फ्लो चार्ट आपको बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होगा. सो प्लीज कॉपी डाउन. आई एम एक्सप्लेनिंग इट. सी, integrated pest management. What is integrated pest management? Integrated pest management is a method of developing agriculture in which least use of chemical pesticides, chemical fertilizers will be done so that we can conserve the ecosystem. Okay, chemical pesticide fertilizer के hazard ecosystem को झेलना न पड़े, तो judicious decision लेके हम yield भी कम नहीं होने देंगे और इकोसिस्टम को डैमेज भी नहीं होने देंगे. दैट इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट. देन सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट. यूज एंड प्रोडक्शन विल बी मैनेज्ड इन अ प्रॉपर वे. अलॉन्ग विद दैट अदर रिसोर्सेस आर डेवलप्ड. ओके, सिर्फ आप अगर फर्नीचर के लिए सिर्फ साग यूज करते हो तो ऑब्वियसली वो स्पीसीज एक्सटेंशन पे आ जाएगी. तो वो क्वालिटीज वाले दूसरे रिसोर्सेज डेवलप करना या फिर दूसरे रिसोर्सेज को प्रोसेस करके उनका क्वालिटी प्रमोट करना, दैट इज रिसोर्स मैनेजमेंट. देन वैरायटी सिलेक्शन. डिफरेंट वैरायटीज फॉर डिफरेंट यूजेस कैन बी सिलेक्टेड. देन ऑर्गेनिक फार्मिंग. ओके, अब यहाँ पे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसके लिए हम कंपेयर करेंगे. इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अलाउज यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एट लास्ट प्रायोरिटी so that damage to the yield should not be there. Along with that, ecosystem should be conserved. But organic farming is not at all using any chemical pesticides as well as fertilizers. Right? Then it is indigenous knowledge. Okay, some varieties, some crop plant are like specific to particular region. So we can go over there, we can study them, we can bring their genes, and we can propagate that important information and can be added artificially in variety of organisms which grow luxuriously in any climatic condition. एक particular area में grow होने वाले organism के genes निकाल के widely spread variety में अगर introduce करते हैं तो obviously वो character, वो yield हमको ज्यादा मिलेगा. So this is how biotechnology is impacting the important field agriculture on which Indian economy is based. As I said, this flow chart will help you to answer the board question. So, इस प्रकार के इसके branches लिख सकते हो. Microbial biotechnology is using or is working in different areas like this. The first one, let's start with clockwise order. It is manage the abiotic stress. See, अगर आप टिश्यू कल्चर क्रॉप करते हो तो वाटर ड्रॉट रेजिस्टेंस, पोल्यूशन रेजिस्टेंट, ऐसे जो क्वालिटीज हमने प्लांट में ऐड किए थे, तो दैट इज अबायोटिक स्ट्रेस मैनेज करने के लिए हमने उनको ट्रेन किया था. प्रमोट बायो रेमेडिएशन. So using some biological methods to control the damage causing disease found in particular agricultural plant. Next one is improved the biomass derived energy techniques. See, as fossil fuel and all are not renewable resources, exhaustible, non-renewable type में आता है वो, तो उसके लिए substitute biomass डेवलप करना और एनर्जी सप्लीमेंट के लिए एडिशनल प्रोविजंस डेवलप करना. जैसे हम अल्कोहल एक फ्यूल का साधन बोल सकते हैं. So by using microbial fermentation you can prepare alcohol which can be added in petrol and which is a renewable source of energy. Value addition in crop, that is biofortification. जीन ट्रांसफर करके बायोफोर्टिफिकेशन करके जैसे हमने गोल्डन राइस वगैरह बनाया था, that can be done with microbial biotechnology. So biofortification is value addition in crops. Increased productivity and quality of crop. जैसे अभी हमने बोला डिजीज रेजिस्टेंट का जीन है, हाई इल्ड का जीन है, वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफर करके उसकी इल्ड बनाना. Enhanced N2 fixation and increased nutritional uptake. जैसे राइजोबिया के पास N2 fixation का जीन है. If we transfer the neat gene of rhizobia to wheat variety, rice variety, it can fix nitrogen and
enhance its productivity as well as protein content in the plant can be increased. Manage the biotic stress. Development of disease-resistant varieties can be considered as the plant has ability to face the biotic stress. So this is how different qualities can be added in agriculture, in domesticated plant, in domesticated animals with the help of this modified microbiological biotechnological processes. Now we are discussing NCERT with reference to a shortest simplified form of vast information. ये मैंने जो फ्लो चार्ट बनाया है ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 195 है. See 194, 195. So this is total one page. पूरे पेज की इंफॉर्मेशन ये फ्लो चार्ट में है जिससे आपको बोर्ड क्वेश्चंस के आंसर लिखने के लिए वो आसानी होगी. Along with that MCQ का एक पॉइंट भी मिस आउट नहीं होगा. Right? So see, as we know, the DNA recombinant technology is based on use of restriction endonuclease, molecular Caesar, right? And the concept that genetic code is universal. ये दो कॉन्सेप्ट पे, ये दो बातों पे बायोटेक्नोलॉजी बेस्ट है. बराबर. अब हमने अलग अलग मेथड सीखे क्रॉप इंप्रूवमेंट के, इन्हांसमेंट के, राइट, प्लांट ब्रीडिंग के, एनिमल ब्रीडिंग के. ह्यूमन रेस का लाइफ और कंफर्टेबल और इम्प्रूव्ड हेल्दी बनाने के लिए हमने अलग अलग मेथड सीखे जिसमें रिसोर्सेज डेवलप करना ये एक वंडरफुल एस्पेक्ट और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है. तो ये रिसोर्स डेवलप करते करते हमने एग्रीकल्चर में इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन ये एस्पेक्ट कंसिडर किया. डोमेस्टिक एनिमल्स में हमने वही प्रोसेस फॉलो की. अब ये जब हम करते थे तो हमारे पास अलग अलग मेथड्स डेवलप हुए, बट अल्टीमेटली वी कंक्लूडेड दैट इफ द ऑर्गेनिज्म इज जेनेटिकली स्ट्रांग then obtaining better yield from genetically strong organism is really very easy. So genetically strong organism बनाने के लिए ये जो strongness का जीन है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करने की क्षमता अगर हम गेन करते हैं तो हमारे लिए ये टोटल इन्हांसमेंट, ये व्हाट वी से इज इम्प्रूवमेंट इज पॉसिबल. ठीक है. प्लांट ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं, प्लांट को इंप्रूव करते हैं. एनिमल ब्रीडिंग में क्या करते हैं, हम एनिमल की क्वालिटी को प्रमोट करते हैं, इंप्रूव करते हैं. तो अगर हम जीन ट्रांसफर सीख गए तो ये पूरा इंप्रूवमेंट हमारे लिए आसान होगा. सो फर्स्ट अटेम्प्ट टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ recombinant DNA was done by these two scientists. So look at the title, first recombinant DNA developed by Stanley Cohen and Hubbard Boyer. These two scientists developed the first rDNA, recombinant DNA, chimeric DNA. It is having two different sources. ये recombinant DNA बनाने के लिए उन्होंने दो सोर्स यूज किए थे. One is the antibiotic, one is the resistant gene, not antibiotic. One is the resistant gene and the other one is vector vehicle obtained from Salmonella. दो सोर्स, एक वेक्टर देने वाला और दूसरा टारगेट डीएनए देने वाला. व्हाट इज द टारगेट डीएनए? एबिलिटी टू डेवलप रेजिस्टेंस इज टारगेट डीएनए. तो ये दो सोर्स से ऑब्टेन किए हुए डीएनए एक दूसरे को जोड़ के तीसरे ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करना और वो ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई बनाना. सो हाउ दिस मेथड, okay, how this procedure was done by them? It was involving 3 steps. Step number 1 is identification of DNA with desired gene. Desired gene is gene for resistance. So this gene is isolated. It is first identified, cut by restriction endonuclease, and it is isolated. Right? So this is one. See, antibiotic resistant gene is isolated and it is attached to native plasmid or Salmonella typhimurium. Okay, Salmonella typhi के नेटिव प्लाज्मिड को एक रेजिस्टेंट जीन अटैच करने की प्रोसेस शुरू हो गई. तो उसके लिए एंटीबायोटिक उसके लिए रेजिस्टेंट जीन लगेगा और व्हीकल वेक्टर प्लाज्मिड लगेगा. ओके, एज इट इज लाइगेटेड. ओके, ये दोनों को कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लगेगा
उनको जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम लगेगा, एंड आफ्टर दैट साल्मोनेला टाइफियम नेटिव प्लाज्मिड प्लस आइसोलेटेड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, as they are attached to each other, what you get? A vector plasmid. Which is a recombinant DNA or chimeric DNA. The attachment is called ligation, and the enzyme used is ligase. So this is step number 2, is introduction of target DNA, attachment of target DNA to the vector vehicle, and chimeric DNA is introduced in host. What is the host cell? It is transferred to E. coli, which is a host cell. So recombinant DNA is transferred to E. coli, and now all the properties which are present with the target DNA are added to E. coli. E. coli is close relative of Salmonella typhi. बात को समझो, आपने जो नेटिव प्लाज्मिड, नेटिव मतलब साल्मोनेला टाइफी का ओरिजिनल प्लाज्मिड ई कोलाई में डाला, तो ई कोलाई ने ये प्लाज्मिड को फॉरेन डीएनए बोल के ट्रीट नहीं करना चाहिए. ई कोलाई शुड एक्सेप्ट द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड इन इट्स ओन सेल. Okay, E. coli accepted because it is close relative of Salmonella typhi. So now E. coli is having chimeric DNA, plasmid of Salmonella plus the resistant gene, and now multiple copies of rDNA in E. coli. So E. coli allows growth of plasmid along with the target DNA. So that recombinant DNA multiply in E. coli cell is called gene cloning, and the E. coli itself again go for microbial cloning. सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए खुद ग्रो होगा, मल्टीप्लाई होगा, अलॉन्ग विद दैट मीडिया पे ऊपर ये ई कोलाई जिसके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसके भी मल्टीपल कॉपीज बनेंगे. तो ये प्रोसेस में व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? gene cloning as well as cell cloning, and you are getting progeny of E. coli with rDNA. Now everyone please refer your classwork में मैंने आपको 3 कॉलम्स बना के दिए. Look at this. See, for any DNA recombinant technology we will need 3 things. First thing needed is target DNA, chimeric DNA, target DNA, passenger DNA, desired gene, gene of insert, foreign DNA, alien DNA. ये सब इसके नाम है, राइट? सो ये टारगेट डीएनए जिसके पास हमारे डिजायर्ड कैरेक्टर को रेगुलेट करने की क्षमता है, वो हम किसी डोनर सेल से ऑब्टेन करेंगे, राइट? सो टारगेट डीएनए इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम और डोनर सेल, ये एक मेथड हमने सीखा था. या टारगेट डीएनए इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम cDNA technology, that is DNA, gene will prepare mRNA, mRNA is processed, and that mRNA is isolated and forced to produce complementary DNA which will be our target DNA, or it can be synthetically prepared. So target DNA बनाने के हमने 3 मेथड सीखे थे, from donor cell, cDNA, right, and one more we said that is synthetic DNA. ये 3 मेथड से हमने टारगेट डीएनए हार्वेस्ट करना सीखा था. अब ये प्रोसेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज. ओके, सो टारगेट डीएनए को कट करने के लिए हमको जो एंजाइम लगेगा उसको हम बोलेंगे आर एंडोन्यूक्लियेज. ये आर एंडोन्यूक्लियेज टारगेट डीएनए को तोड़ने के लिए भी काम करता है और वेक्टर को तोड़ने के लिए भी काम करता है. वेक्टर is cut off by the same restriction endonuclease which was used to cut the target DNA, so that sticky end of the target DNA should be complementary to the sticky end of the vector vehicle, right? Okay, तो हमने ये प्रोसेस है टारगेट डीएनए जो आइसोलेट किया था, it was with a sticky end like this. These are unpaired nitrogen bases. The middle part is with paired nitrogen bases. This vector vehicle is cut by same restriction endonuclease like this,
एंड द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, यहाँ पे जो अनपेयर्ड नाइट्रोजन बेसिस है वो वेक्टर व्हीकल के नाइट्रोजन बेस को कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, क्योंकि हमने दोनों को एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया. ओके, नाउ दे आर अटैच्ड टू ईच अदर and by obtaining by ligation what we get is rDNA, recombinant DNA, chimeric DNA, right? So for any DNA recombinant technology what we need are three things. One is target DNA, second is vector vehicle, and third one is donor, third one is host cell. And one very important enzyme, that is restriction endonuclease. So let us discuss in detail about restriction endonuclease. ये न्यूक्लियस प्रकार का एक एंजाइम है जो न्यूक्लियोटाइड को तोड़ता है, न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ने वाला न्यूक्लियस, राइट? सो डीएनए आरएनए विच आर पॉलीमर्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, उसको अंदर से तोड़ने वाला एंडोन्यूक्लियस, एंड को तोड़ने वाला एक्सोन्यूक्लियस, और स्पेसिफिक पैलिंड्रोम पे तोड़ने वाला restriction endonuclease. So let us take information about variety of restriction endonuclease found in the cell. I request one more time, ये जो एक बेसिक डायग्राम मैंने आपको ड्रॉ करके दी थी वो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठनी चाहिए. वो मैं फिर से समझाऊंगी, लेकिन वो डायग्राम को पकड़ पकड़ के चलेंगे. That is the base, every time giving you guidelines. So please have that diagram with you, read it thoroughly, which is explaining each and every point of entire lesson. Okay, so come for details of restriction endonuclease. We are on page number 195. हमने 194, 195 का एक फ्लो चार्ट देखा. Now this is total information of page number 195 as well as 196. It is related to restriction endonuclease. See now, this is restriction enzyme. Restriction enzyme, as I said, it is a type of nuclease enzyme. See, it is firstly obtained from E. coli. It was firstly obtained from E. coli. So E. coli से obtain किए वाले enzyme के बारे में या restriction enzyme के बारे में ये information है. These are the two enzymes restricting growth of bacteriophage in E. coli. Now, one very important thing, why it is called restriction endonuclease? Because it restricts the growth of foreign DNA, foreign virus in the bacteria. So bacteriophage की बैक्टीरिया के अंदर की ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट करने वाला एंजाइम restriction endonuclease. ये कैसे रेस्ट्रिक्ट करता है? When bacteriophage infect the bacteria, its genetic material enter into bacterial cell. That genetic material, it is recognized by the bacteria's enzyme that it is a foreign chemical, and that foreign DNA is cut at specific location and is made non-functional. As the genetic material of virus become non-functional, it cannot grow in the body of the bacteria. So as it restricts the growth of bacteriophage in the bacteria, is called restriction endonuclease. This restriction endonuclease is naturally growing. This restriction endonuclease is naturally growing in the bacterial cell. It is developed by them naturally. When we come to know that bacteria develop such type of enzyme, then we started thinking about DNA recombinant technology. So it is naturally present in bacteria to protect the bacteria from bacteriophage infection, to protect the bacteria from transformation as well as transduction. So this this enzyme is making DNA, foreign DNA non-functional by two mechanisms. Okay, so these two mechanism is set number 1, enzyme का पहला set है, जो it causes inactivation of bacteriophage by addition of methyl group to DNA. The process is called methylation. The foreign DNA when enter in bacteria, it's methylated and it becomes non-functional, it cannot replicate. What is the other method? Is inactivation by cutting phage at palindrome, so it is called restriction endonuclease. Right? So this restrict growth by two means.
either by methylation or by cutting. When it is cutting at particular palindromic sequence, we call it as restriction endonuclease. Right? Now these restriction endonuclease, come to the next information. This restriction endonuclease, the first restriction endonuclease is obtained is HindII. Okay, its nomenclature के rule अभी देखते हैं, but the first one which is obtained is HindII, which has ability to cut the DNA. So remember, type 2 enzyme, type 2 restriction endonuclease are useful in DNA recombinant technology. Type 1 are naturally present in bacteria, protecting the bacteria, but we are not using them in artificial development of our DNA technology. So type 2 are useful. This type 2 में सबसे पहले हमने जो isolate किया is HindII. Right now, HindII cut DNA at palindrome at 6 base pair length. Majority of restriction endonuclease are cutting the DNA at palindrome, and the palindrome is made up of 6 nitrogen base pair. यहाँ पे स्टेट बोर्ड वालों ने एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम दिए हैं और उनके पैलिंड्रोम मेंशन किए हैं. विल डिस्कस इट व्हाइल रीडिंग इन स्टेट बोर्ड बुक. ओके, सो हमने देखना है. ओके, सो पैलिंड्रोम इज ऑफ 6 nitrogen base pair. It is called recognition sequence for HindII. For that particular restriction endonuclease, that will be the recognition sequence, right? Then, up till now, 230 strains of bacteria have given us 900 restriction enzyme with different recognition sequence. अब तक जो हमने डिस्कवरीज की, तो हमने अराउंड 230 बैक्टीरियल स्ट्रेन में से 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज आइसोलेट किए हैं. ऑब्वियसली ये अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के साइट्स, रिकॉग्निशन साइट्स, सीक्वेंस अलग अलग है. सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, हमको कौन से क्रोमोसोम के, कौन से डीएनए के, कौन से लोकेशन पे कट करना है, वो डीएनए पे नेचुरली कौन सा पैलिंड्रोम प्रेजेंट है, वो पैलिंड्रोम को कट करने वाले अलग अलग जेनेटिक सीजर्स हमारे लेबोरेटरी में स्टोर्ड है. We'll analyze the chromosome, we'll analyze the DNA, we'll find out the palindrome, and accordingly we'll use the restriction enzyme. Okay, जैसे मैंने आपको बोला था, restriction enzyme is like a scissor. It has a cutting pattern. So हमको जो पैटर्न को कट करना है, जो पैटर्न से कट करना है, उसके अनुसार हम restriction enzyme select करेंगे. So for that we are having 900 different restriction enzyme with different cutting pattern. Now come to nomenclature. जैसे आप केमिस्ट्री में nomenclature सीखते हो, okay? जैसे आप बॉटनिकल nomenclature सीखते हो, वैसे ही restriction endonuclease के भी nomenclature के rules बनाए गए हैं. So method and conventions of naming enzyme. Okay, if I am talking about EcoR1, what is the name of the restriction enzyme? EcoR1. Here E, first letter, okay, it is name of genus of the host. जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपने वो एंजाइम हार्वेस्ट किया है, उसके जीनस का पहला, जैसे इश्चेरेचिया का कैपिटल ई हम यहाँ पे यूज करेंगे. कोलाई इज द स्पीसीज. सो कोलाई का CO will be the second letter of the name. It is representing species of bacteria, that is Escherichia coli. Right? Now, R, it is derived from name of the strain. You know strain, there are different types of bacteria, different subspecies, different races are there. So on the basis of strain, the alphabets are used. So it is E for Escherichia, Co for coli, R for strain, and 1, that Roman number is order in which enzyme were isolated. So Roman number है, Escherichia coli में से EcoR1 ये ऐसा एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जो हमने सबसे पहली बार आइसोलेट किया है. राइट? सो प्लीज गो थ्रू द नॉमेनक्लेचर एंड द इंफॉर्मेशन. यहाँ पे आपको सबसे पहली बात आपको नोट करनी है, एज आई सेड that restriction enzymes are of two types. One is inactivating the foreign DNA by methylation, and other is inactivating, making the foreign DNA non-functional by cutting at palindromic sequence. समझ रहे हो? Right? So ये दो टाइप आप भूलते हो, ये आप ध्यान में रखेंगे.
और अलग अलग पैलिंड्रोम के सीक्वेंस और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम जो हम स्टेट बोर्ड में सीखने वाले हैं. So this is regarding information of restriction endonuclease. So we discussed restriction endonuclease, how they are named. So alag names, different names if we talk about, then the first one, as we said, HIND2. Here H stand for Haemophilus, IN stand for influenzae, right? And it is the D strain. D, last alphabet D stands for the strain, and it is the second enzyme isolated from the Haemophilus bacteria. So nomenclature is HIND2. Like that, the names which are given in state board are ALU1, which is obtained from Arthobacter luteus. BUMH1 is obtained from Bacillus. EcoR1 obtained from Escherichia coli, strain RY number 13, and HIND2 is obtained from Haemophilus influenzae RD. Right? So this is about its nomenclature. So हमने अभी तक देखा restriction enzyme cut at particular location to restrict the growth of foreign DNA into the bacteria. Different enzymes have different restriction sites, their names, rules of nomenclature, and now come to the functioning of restriction endonuclease, how they work. See, this green colored one is vector DNA. It may be plasmid, it may be virus, it may be some artificial structure. Right? So this is what is a vector vehicle. This vector vehicle has this sequence which is called palindrome GAATTC, right, at one particular location. This black one is our target DNA, foreign DNA, alien DNA, which is also having same nucleotide sequence GAATTC at particular location. As you know, this sequence are always read in 5:3 direction. So this vector DNA, this foreign DNA are cut by restriction endonuclease EcoR1, which is sensing GAATTC. जैसे हमने इसको बोला था गट्टक, restriction endonuclease EcoR1 गट्टक को सेंस करता है और देखो कैसे कट करता है. It is cutting the phosphodiester bond between G and A, right? G और इसके बाजू का A, यहाँ का phosphodiester bond कट हुआ, फिर continuously hydrogen bond कट हुए, and again it cuts the phosphodiester bond between last A and G, so that you get the TTAA as unpaired nitrogen bases. Same method, same mechanism of cutting the foreign DNA with EcoR1 occurs over here, and you get sticky end AATT. So sticky end of vector DNA and the end of target DNA are complementary to each other and can stick to each other easily. वेक्टर डीएनए को आपने कट किया, उसके अनपेयर्ड नाइट्रोजन बेसिस, फॉरेन डीएनए को आपने कट किया, उसके अनपेयर्ड नाइट्रोजन बेसिस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है, इसलिए हम उसको स्टिकी एंड वाला डीएनए बोलेंगे, राइट? एंड देन इट इज लाइगेटेड, एंड आफ्टर लाइगेशन व्हाट यू गेट ग्रीन एंड ब्लैक इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए. सो सेम डायग्राम इज देयर इन योर एनसीईआरटी. अब ये डायग्राम पे कौन से एमसीक्यूज पूछे जाएंगे? What is the restriction site for EcoR1? Answer will be GAATTC. Right? How many base pairs are there in the palindrome? So you can calculate. It is having total GAATTC. It is having six nitrogen base pair. They can ask you how many phosphodiester bonds are broken. Right? They can ask you how many hydrogen bonds are broken. They can ask you how many unpaired nitrogen bases are there. They can ask you how many unpaired nitrogen bases are there to produce the sticky end. So unpaired nitrogen bases you are supposed to talk about 1, 2, 3, 4. Right? Okay. What is the process
of sticking the vector DNA to target DNA. The process is ligation. Which enzyme mediates the process? It is enzyme ligase. What is product of ligation? Is recombinant DNA. Understood, right? And they can ask you different restriction enzymes, their cutting site and the different aspects. जैसे मैंने इको R1 के लिए आपको अलग अलग क्वेश्चन पूछे, जैसे वो अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए पूछ सकते हैं, right? Okay, so one more thing you are supposed to know that restriction endonuclease again are of two types. टाइप 2 का restriction endonuclease जो DNA को कट करता है, it can cut in this way to produce sticky end or it can cut in blunt way. Blunt is it is cutting opposite ends. Blunt में क्या होगा, ये opposite end को कट करेगा, मतलब यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट किया तो एग्जैक्टली अपोजिट यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट करेगा. यहाँ पे इधर एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, देन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड देन यहाँ पे phosphodiester bond. So restriction endonuclease giving you sticky end won't cut the phosphodiester bond which are lying opposite to each other. They are somewhere mismatched, so giving you unpaired nitrogen bases. But there are some restriction endonuclease which can cut phosphodiester bond in front of each other, giving you a DNA which is having blunt ends. This is how the cutting of target DNA as well as the vector DNA is done, facilitated by restriction endonuclease, and because of the rule of complementarity, the sticky end can join. So restriction endonuclease जो blunt end से कट करता है, वो हम DNA recombinant technology में यूज नहीं करेंगे. जो sticky end से कट करता है, उसी को हम यूज करेंगे. Right? Now remember, there will not be a colorful diagram in your exam. So you have to read this vector DNA, this foreign DNA, this terminology in proper way. Sometimes they don't mention it, so आपको NCERT का कभी-कभी सीक्वेंस भी ध्यान में रखना पड़ता है. ये वेक्टर है और ये फॉरेनर है, okay? और ये chimeric है. Okay, they can ask you here. They will write down A. What is this enzyme? Here they will write down B. What is this enzyme? So diagram-based question can be also asked on this area. So वो हमको अच्छे से देखना है. Please go through the diagram properly. चलो देख ली डायग्राम अच्छे से. Now one more type of question can be asked on the basis of palindrome. Okay, here the palindrome for EcoR1 is GAATTC, right? It is read in 5:3 direction. Okay, so आप सब लोगों को ध्यान में देना है कि अगर 5:3 डायरेक्शन से पढ़ते हो तो ही न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस दोनों स्ट्रैंड पे GAATTC आएगा. Okay, see this. If you are reading it in 5:3 direction only, then only you are getting it GAATTC. अगर आप एक को 5:3 पढ़ते हो और दूसरे को 3:5 पढ़ते हो, देखो I am reading it 5:3 GAATTC and complementary strand I am reading in 3:5 direction. It will be CTTAAG. So sometime they write down the direction and then tell you to find out the complementary strand, complementary sequence or palindromic sequence. तो यहाँ पे हमको डायरेक्शन ध्यान में रखनी है. Everything as far as direction is concerned is 5:3. Palindrome is read in 5:3 direction. Codon is read in 5:3 direction. Codogene are read in 5:3 direction. Transcription, translation occur in 5:3 direction. Right? So थोड़ा पीछे वाला कंटेंट जो हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में सीखा था. DNA polymerase work in 5:3 direction. RNA primer synthesizes RNA primer. RNA primase synthesizes primer in 5:3 direction. ये सब आप ध्यान में रखेंगे. See, this is an entire diagram explaining production of recombinant cells, recombinant microbes, recombinant GMOs. So entire process को देखते हैं. See,
This blue colored one is foreign DNA. This foreign DNA is cut by restriction endonuclease into different segments. You will get many segments. Remember this. ये डायग्राम में एक ही सेगमेंट नहीं उतारा है. You will get many segments. By using a technique of screening, you are supposed to find out which one is having target DNA. ये तीन में से अगर आपको ये सीक्वेंस, ये जो सेगमेंट है, इसमें अगर आपका टारगेट डीएनए है तो आपको स्क्रीनिंग से ये डीएनए को पहचानना होगा. ओके, अब ये डीएनए को, टारगेट डीएनए को एक बार पहचान लिया तो उसको पीसीआर मशीन में डाल के जीन एम्प्लीफिकेशन करवा के जीन बैंक में स्टोर करके दिया जाता है. वंस यू हार्वेस्ट द टारगेट डीएनए बाय स्क्रीनिंग, इट इज एम्प्लीफाइड इन पीसीआर, attached to the vector vehicle, and it's conserved or saved in gene bank, gene library. So foreign DNA cut by restriction endonuclease, you get many fragments. You are supposed to find out which fragment has the target DNA, and then it is ligated to the vehicle vector. This is C, plasmid. You know plasmid is DS circular DNA, is extra chromosomal. It is having its origin. So this is a plasmid vector. It is again cut with same restriction endonuclease. So complementary nucleotide of target DNA and complementary nucleotides of plasmid are producing sticky end, and they are attached to each other. They are ligated. See, it is shown by blue coloration. Okay, so here the enzyme ligase will be there. For cutting, here the enzyme will be restriction endonuclease. As they are ligated, you get a recombinant DNA molecule, chimeric DNA molecule. This chimeric DNA is now kept, okay, in a large vessel which contain the host cells. So few host cell will uptake the chimeric DNA. Okay, few host cell will uptake the chimeric DNA. Now they are recombinant cells. These recombinant cells are tissue cultured. These recombinant cells are tissue cultured, and now you get clones of recombinant cells. So ये आपको हजारों clones देंगे. Along with that, within the cell, the recombinant DNA will multiply. So cell के अंदर recombinant DNA का multiplication, इसको हम बोलेंगे gene cloning, और ये recombinant cell का multiplication, इसको हम बोलेंगे cell cloning, microbial cloning. So this is how you are getting this GMO, genetically modified organism, which contain target DNA. अब ये सेल के अंदर ये टारगेट डीएनए की जो भी क्वालिटी है, जो भी केमिकल बनाने की क्षमता है, वो एक्सप्रेस होना शुरू हो जाएगा, और ये सेल के अंदर वो केमिकल अबंडेंट फॉर्म में बनेगा. नाउ दिस सेल्स आर ग्रोन इन लैबोरेटरी, दे आर ग्रोन इन लार्ज वेसल्स, fermenters. So here you require engineering principle. So obtaining a GMO is a total biological process. Growing them on large scale and giving all the facilities for their proper growth is engineering principle, and harvesting and purification are again the combined processes. So this is how biotechnology requires help of microbiology, genetics, engineering, biomolecules, right, physiology, then different harvesting method, etc., etc. So it is an applied branch based on variety of information, variety of disciplines, and giving you the proper yield.